Good morning everyone. In the last video, we have discussed the different type of the solid, that the amorphous and crystalline solid. And in this video, we are going to discuss about the different type of the crystals, that is the crystalline solids. So when we talk about the crystalline solids, then on the basis of the nature of the material, we can classify the crystalline solid. That is the solid which have metallic nature, which is made by the metal, that is called the metallic solid. Those are the crystals which are made by the ionic species, they are called the ionic solid. Those are the crystals which are made by the covalent compound, they are called the covalent solid. And those which are made by the specific arrangement of the molecule, they are called the network crystal solid, for example diamond and graphite. So these are the different type of the crystals whatever we have to study. But we have to actually study the arrangement of the molecules in the crystals. And why? Because of the arrangement, what type of property, such type of property is in system is going to show. That is our topic. So when you will talk about the type of crystals, we talk about the unit cells. Unit cells means those of the structure by the combination of which we prepare the overall solid, overall crystals. So when we talk about these of the arrangements are called a unit of the crystals. And in your syllabus, you will have to study only about the cubic unit cells. So we are going to study about the cubic unit cells. There are different type of the cubic unit cells. For example, the face-centered cubic, body-centered cubic, primitive cubic, end-centered cubic, and some of the other cubics. So what are the difference in these of the cubics? Our main topic, main cubics are the BCC, FCC and primitive, that is the body-centered cubic, face-centered cubic and the primitive. So we are going to study only about these of the units. So we are starting with the primitive one, that is the primitive cubic unit. So here I have tried to draw a cubic, एक cubic draw करने की हमने कोशिश की. What is the condition for the primitive cubics? For the primitive cubic, all the atoms are only on the carbon. यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि जब solid होते हैं, crystals होते हैं, then they are the close compact. That means they are just touching to each other. लेकिन हम ड्रा करते समय क्लोज कम्पैक्ट नहीं ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम क्लोज कम्पैक्ट ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इतना बड़ा दिखाना पड़ेगा कि आगे चल के बहुत कॉम्प्लेक्स सा सब कुछ स्ट्रक्चर होगा, आपको पूरी तरह से विजिबिलिटी नहीं आएगी. इस वजह से हम सिंपल ही ड्रा कर रहे हैं. सो दिस इज द सिस्टम. द फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ. That means the atoms are only on the corners. This is called a primitive unit cell. And if this is the primitive unit cell, that at how many points the molecules are surviving, what is the lattice point? So when you will talk about the lattice point, you can see that the lattice point in the primitive unit cell is total 8. That is the 8 corner. All the 8 corners are occupying. All the atoms are occupying the corner position, so the lattice point is 8. And what is the value of Z? That is the lattice point each unit cell. What is the lattice point with each of the unit cell? When you will see with each of the unit cell, then you will have to see that what is the participation of any of the molecule within a cube. Now you will have to imagine in the 3D, because I have a 2D board, and on 2D board I am not able to explain all the things. So just imagine that in which room you are sitting, that is the cubic cell. Okay, and at one of the carbon, that is the top corner or bottom corner, at one of the carbon you consider a molecule which have radius half of the height of the room. Now in this condition, when you will consider, you will find if this is the topmost point of the room, the molecule is surviving somewhat like this. That means the half molecule is below the roof and half molecule is above the roof. So what is the condition of those of the molecule, those part of the molecule which is below the roof? अगर हम इसके लिए देखें तो ये देखिए, ये below the roof कुछ इस तरह से होगा. ये रूम है जिसमें आप बैठे हुए हैं और ये अगल बगल के नेबरिंग रूम्स बोल सकते हैं.
अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कुछ यूं रहेगा, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल जो लोअर पोर्शन में था, हाफ मॉलिक्यूल तो छत के ऊपर था, हाफ मॉलिक्यूल छत के नीचे, जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो भी 4 अलग अलग क्यूब्स में, 4 अलग अलग रूम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हम रूम को ही क्यूब मान के चल रहे हैं तो 4 अलग अलग रूम में पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मींस व्हाट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विद अ सिंगल क्यूब, विद अ सिंगल रूम हियर, just 1/4 of the half molecule and 1/4 of the half equal to 1/8. That means each of the corner is participating with a specific cube just by 1/8. सिर्फ 1/8 की उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी क्या है, बाकी अगल बगल के दूसरे क्यूब्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच ऑफ द कॉर्नर इज जस्ट 1/8. व्हाट इज द टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द क्यूब? देयर आर टोटल 8 कॉर्नर्स and each of the corner is participating by 1/8. That means the total participation, that is the value of z equal to 8 into 1/8, that is 1. So the value of z from the primitive system is 1. Now we are trying to see that what is the coordination number, what is the number of the neighboring atoms. Let's consider that this is the atom at this point. Okay, then what will be the neighboring atoms, where will be the neighboring atom? अगर ये कॉर्नर है और इस तरह से हम मान के चलें कि यहाँ पे ये क्यूब्स हैं, 2D में है तो मैं बस एक ही लेयर बना सकता हूँ, तो यहाँ पे ये है, तो इसके नेबर्स कहाँ पे होंगे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 नेबरिंग एटम्स हो गए। ये नेबरिंग एटम्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे क्योंकि वो नेबर्स नहीं है, वो काफ़ी दूर है। सो देयर आर 4 नेबरिंग एटम्स ऑन 2D। और नेक्स्ट डायमेंशन कहाँ आएगा? नेक्स्ट डायमेंशन यहाँ आएगा, यानी अबव द बोर्ड। तो एक यहाँ कहीं पे होगा अबव द बोर्ड और एक इसी के अपोजिट बिलो द बोर्ड, बिलो द प्लेन। तो यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द कॉर्नर एटम, बिकॉज ओनली कॉर्नर एटम आर हियर, सो नो नीड टू स्पेसिफाई। So the coordination number for these of the atoms will be 6. That means there are 6 neighboring atoms around these of the molecule. So the coordination number is 6. Now we are seeing the packing efficiency for the primitive system. तो सबसे पहले तो ये जानिए कि पैकिंग एफिशिएंसी होती है। जब भी कोई स्फेरिकल सिस्टम, हम हाथ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन मेरा हाथ 100% स्फीयर नहीं है, ये ऑलमोस्ट सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, 100% सिलेंड्रिकल भी नहीं है, लेकिन सिलेंड्रिकल की तरह ज़्यादा बिहेव कर रहा है देन अ स्फीयर। अगर मैं इन दोनों को यूं करूं और इसी तरह से और अगल बगल में लगा दें, तो क्या इनके बीच में कोई गैप होगा? श्योरली अगर सिलेंड्रिकल होगा तो गैप होगा ही होगा, क्योंकि कई सारे सिलेंडर्स के बीच में थोड़ा गैप होना मस्ट है। गैप तब नहीं होगा जब पूरी सरफेस होगा, जब वो क्यूब जैसा हो, जब वो क्यूबाइड जैसा हो, तब उनके बीच में गैप नहीं होगा। सिलेंडर के केस में गैप होगा, स्फीयर के केस में गैप होगा। तो हम यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल, सो देयर मस्ट बी गैप इन बिटवीन दीज ऑफ द स्पेसीज। Some of the portion of the cube will be filled by these of the atom and remaining portion will remain vacant. That what portion, then what portion of the cube is occupied by these of the molecule, that is called the packing efficiency. अगर पूरा क्यूब जो है उसका 10%, 20%, 40%, 60% जो कुछ भी परसेंटेज पोर्शन ये मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दैट परसेंटेज ऑफ द ऑक्यूपेशन विल बी कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी. So we are just trying to find the efficiency, that is the packing efficiency of the primitive cubic. That means simple percentage you will find. But how you will find the percentage? Because for finding the percentage, you need the volume of the molecule, you need the volume of the cube, and then you can say that the volume of molecule upon total volume, that is the volume of cube into 100. That will be the percentage composition, that will be the packing composition. But for this, we need such a value that can be solved with each other. But you know well, when you will go for the volume of a cube, you will get the volume in terms of the edge length, because the volume of cube equal to a cube.
And when you will go for the volume of the molecule, you will find the volume in terms of the r, that is the radius of the molecule. Because the volume of the molecule is 4 by 3 pi r cube. Now in this way you can say that you are not able to find the percentage composition or the packing efficiency. But if you are able to find the relation in between the radius of the molecule and age length of the cube, then you can find. So we are first trying to find the ratio of A and R, that is the age length of the cube and the radius of the molecule, and then we will find the packing efficiency. So see here, I have tried to draw only the front face, सिर्फ सामने वाला फेस ड्रा किया है, उसके अलावा हमने कुछ भी ड्रा नहीं किया है। अब यहाँ पे इस फ्रंट फेस में हमने चारों मॉलिक्यूल शो किए हैं, 2 मॉलिक्यूल कंप्लीट, 2 मॉलिक्यूल डॉटेड लाइन से शो किए हैं। सो हो सकता है ज़्यादा क्लियरली आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब इसमें देखिए, दिस इज द एज लेंथ ए, आई हैव रिटन ए हियर, दिस इज द एज लेंथ ए, एंड दिस एज लेंथ is composed of 2 radius of the molecule, the first one and the second one. So there are 2 radius and 1 age length. So you can say that A equal to 2R. The age length radius relation is always important for the calculation purpose. So what will be the volume of the cube? The volume of cube equal to A cube, and if you are writing the value in terms of the radius, it will be 2R cube, that is 8R cube. This is the volume of the cube. Now volume of the molecules, कितने मॉलिक्यूल का निकालें? वैसे तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल है, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं, एंड स्फेरिकल स्पेसिस हैव वॉल्यूम 4 by 3 pi r cube, और एक क्यूब में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। वैसे तो आप कह सकते हैं कि 8 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन 100% एक ही कर रहा है, एंड दैट इज सजेस्टेड बाय द जेड। जो जेड की वैल्यू होती है वही होती है कि एक मॉलिक्यूल में कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 है। सो द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 4 by 3 pi r cube, because value of z is 1, so I am not multiplying that. Now packing efficiency. Packing efficiency, and the packing efficiency is the volume of molecule upon volume of cube into 100. You have the volume of molecule, you have the volume of cube, just put the value. So the volume of molecule is 4 by 3 pi r cube, and the volume of cube is 8 r cube into 100 for finding the value in terms of the percentage. Just solve it. The r cube will be cancelled by the r cube. 4 1 ja 4 2 ja 8. So what is the value? If we are taking the value of pi as a 22 by 7, so it will be 3.14 into 100 divided by 3 2 ja 6. And when you will solve it, you will get the value. When it will be multiplied by 100, it will be 314, and when it will be divided by the 6, it will be 52.33% approx. Then this is the packing efficiency, and this is the overall property of any of the primitive cubic cell. In the next video, we will discuss about the next cubic, that is the BCC, that is the body centered cubic, and the FCC, that is the face centered cubic. Till then, thank you and have a nice day.